हेलो एवरीवन। तो अभी तक हम लोग पार्ट 2 तक ख़त्म कर चुके हैं। लगभग हम लोग अब एंड में पहुंच चुके हैं वर्ड पावर मेडिजी के। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट पार्ट 3 ऑफ वर्ड पावर मेडिजी, विच इज़ अबाउट फिनिशिंग विद अ फीलिंग ऑफ कंप्लीट सक्सेस. It means that this section will cover all the words which are remaining and revise the previous words. Let's move further and let's look into it. Okay. Um, mm, okay. Let me select my pen. How to talk about common phenomena and occurrences. Uh, this chapter 14, will contain from session 39 to session 41. Let's move. Trigger preview. What words aptly describes dire poverty and emotion experienced without direct participation? Something which lasts a very short time, an offensive word for an unpleasant idea, light and easy banter, someone who is cow-like in his solidity, homesickness, harsh sound, meat-eating animal, एंड समथिंग केप्ट सीक्रेट. बेसिकली अगर बहुत ज़्यादा पॉवर्टी है तो उसको आप क्या कहोगे? इमोशन जो एक्सपीरियंस करते हो आप बिना डायरेक्ट पार्टिसिपेशन के, मीन्स जैसे किताब पढ़ के आप किसी कैरेक्टर को जो है फील कर लो, तो क्या है वो बिना डायरेक्ट पार्टिसिपेशन के ही आप उसके इमोशन को फील कर ले रहे हो. समथिंग विच लास्ट वेरी शॉर्ट टाइम, जो बहुत ही कम समय के लिए रहता है. एक इनऑफेंसिव वर्ड, एक अनप्लीजेंट आइडिया के लिए. कोई आइडिया आपको दिया गया और वो आपको पसंद नहीं आया तो आपने उसके लिए एक वर्ड दिया, लेकिन वो अनप्लीजेंट नहीं है, मतलब ऑफेंसिव नहीं है बेसिकली. लाइट एंड ईजी बैंटर, किसी की टांग खींचना. समवन हु इज़ काउ लाइक इन, मतलब बहुत सीधा आदमी है. होम सिकनेस, जिसको घर का सिकनेस है, घर से बाहर नहीं निकलना चाहता है. हार्श साउंड, जो बहुत बेसिकली क्या बोलेंगे उसको, हार्श है, कानों को अच्छा नहीं लग रहा है. कैकोफोन होगा, ये कैकोफोनिक साउंड होगा. मीटिंग एनिमल, पता ही है मीट ईटिंग एनिमल्स क्या होते हैं. दो तीन तरह के आपके पास एनिमल्स हैं. एक हर्बीवोरस हैं, एक कार्निवोरस हैं, और एक ओमनीवोरस हैं. तो जो ओमनीवोरस होते हैं वो क्या करते हैं? वो हर तरह का खाना खाते हैं, ठीक है. और कार्निवोरस क्या करते हैं? वो मीट ईटिंग एनिमल होते हैं. स्पेलिंग में मिस्टेक लग रही है थोड़ी सी मेरे को. और हर्बीवोरस में वो सिर्फ प्लांट बेस्ड फूड खाते हैं, ठीक है. नाउ समथिंग केप्ट सीक्रेट, जो सीक्रेट रखा गया है. चलो लेट्स स्टार्ट सेशन 39. दिस वर्ल्ड, रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन वंस क्लेम्ड विद I think is I think questionable logic, is so full of number of things that we should all be as happy as kings. बेसिकली कह रहे हैं कि देखो, आर.एल. स्टीवेंसन कहते हैं कि ये दुनिया में इतना कुछ है कि हम सब खुश रह सकते हैं, ठीक है. बट प्रॉब्लम क्या है? सब खुश नहीं है, तो लॉजिक क्वेश्चनेबल है. I doubt very strongly that happiness comes from the outside or that kings are necessarily happy. कहता किंग जिसके पास सब कुछ है वो खुश है, ऐसा मैं नहीं मानता. और मुझे ऐसा भी नहीं लगता कि बाहर से खुशियाँ आती हैं. बट आई विल गो दिस फार एंड नो फर्दर विद स्टीवेंसन. दिस वर्ल्ड इज सर्टेनली फुल ऑफ अ नंबर ऑफ थिंग्स. For instance, poverty and misery, hospitals and insane asylums, slums and racial restriction, cut down forests and once fertile lands becoming progressively more arid, war and death and taxes are bumbling diplomats. बेसिकली देखो, कह रहा है कि दिस वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ सो मैनी थिंग्स, सो मच. इसमें पॉवर्टी भी है, मिजरी भी है, हॉस्पिटल भी है, इंसेन असाइलम्स हैं, स्लम्स है, रेशियल रिस्ट्रिक्शंस है. रेशियल रिस्ट्रिक्शन क्या होता है? दिस इज़ ब्लैक, दिस इज़ वाइट, दिस पर्सन बिलोंग्स टू दिस कास्ट, दिस पर्सन बिलोंग टू दिस रीजन. दीज आर रेसिज्म. एंड कट डाउन फॉरेस्ट एंड वंस फर्टाइल लैंड्स बिकमिंग प्रोग्रेसिवली मोर एरिड. एंड वॉर एंड डेथ एंड टैक्सेस बम्बलिंग डिप्लोमेट्स. बेसिकली जो टैक्सेस हैं और इन सब बातों के बारे में बात हो रही है. आई नो दैट स्टीवेंसन हैड अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ थिंग इन माइंड फॉर रोमांटिक पोएट्स टेंड टू व्यू द वर्ल्ड थ्रू रोज टिंटेड स्पेक्टिकल्स. कहता है कि देखो, जो रोमांटिक पीरियड के जो राइटर्स थे वो हमेशा रोज पेंटेड स्पेक्स देखते थे कि हाँ सब कुछ सुंदर है, सब कुछ अच्छा है, और इस वर्ड से वो बहुत जो हम मीनिंग निकाल रहे हैं वो उससे कुछ अलग जो है मीन कर रहे थे.
I know that इसके बाद कहाँ गया spectacles, but it is often necessary to counter one extreme with another, but sometimes it is often necessary to counter that rosy effect with the other extreme, like no, everything is not good, and I simply wish to set a record straight. In this chapter, we are going to discuss a number of things to be found in the world and in the mind of inhabitants: poverty and wealth, second-hand emotion, a relativity of time, praise of various sort, small talk and how to indulge in it, animals, longing for the past, sound, eating habits, and many kinds of conditions of secrecy. As you see, when you start exploring ideas, as we constantly do in these chapters, you never know that what will turn up. हम इसमें ढेर सारे वर्ड्स देखेंगे जो वर्ड्स रिलेटेड होंगे पॉवर्टी से, वेल्थ से, सेकेंड हैंड इमोशन से, मतलब डायरेक्ट आप फील नहीं करो उसको, रिलेटिविटी ऑफ टाइम से, प्रेज ऑफ वेरियस सॉर्ट्स से, और स्मॉल टॉक और हाउ टू इंडल्ज इन इट, एनिमल्स के बारे में बात करेंगे, और लॉन्गिंग फॉर द पास्ट के लिए, साउंड और ईटिंग हैबिट्स के बारे में भी बात करेंगे. लेट्स स्टार्ट विद द आइडियाज़. For the want of green stuff, there are those people who are forced, often through no fault of their own, to pursue an existence not only devoid of such luxuries as radios, television sets, sunken bathtubs, electric orange juice squeezer, automobiles, jacuzzis, private swimming pools, etc., but but lacking also in many of the pure necessities of living: sufficient food, heated homes, hot water, vermin, rodent-free surroundings, and decent clothing, etc. Such people live in penury. जो आदमी बहुत अटर पॉवर्टी में रहता है वो क्या है? प्यूनरी. जो बेसिक जो है नेसेसिटीज़ नहीं जुटा पाता अपनी ज़िंदगी के लिए, दैट इज़ सफिशिएंट फूड और हीटेड होम्स, hot water, vermin, and rodent-free surrounding, and decent clothing. Now, these essential things are being talked with respect to the cold countries. हमारे पास अच्छा खाना हो, हमें हीटेड होम्स नहीं, नॉर्मल होम मिल जाए उतना ही बहुत है इंडिया में. हॉट वाटर की जगह नॉर्मल क्लीन वाटर मिल जाए पीने के लिए, वही बहुत है. वर्मिन और रोडेंट फ्री मतलब कीड़े मकोड़े से रहित हमारा एक सराउंडिंग मिल जाए, वो तो मतलब वो तो लग्जरी है इंडिया में. और डिसेंट क्लोथिंग, नॉर्मल कपड़े मिल जाए वो भी बहुत है. डिसेंट क्लोथिंग तो दूर की बात है. तो इंडिया की पॉवर्टी और ज़्यादा ख़राब है, दैट इज़ पिन्यूरी. अफ्रीका में चले जाओ और ज़्यादा बुरी स्थिति है. एटलीस्ट वॉच इट. ऑल नॉर्मल पीपल वांट एंड नीड लव and at least a mediocre of the excitement in their lives. So say the psychologist. If no one loves them, and if they can find no one on whom to lavish their own love, they may often satisfy their emotional longings and needs by getting their feelings secondhand through reading love stories, attending motion pictures, and watching soap operas. देखो, कह रहा है जिन आदमी को all normal people want love and need, जो भी है, need love and at least mediocre of excitement in their life. कुछ एक्साइटमेंट और थोड़ा प्यार होना चाहिए सभी की ज़िंदगी में. बट जिसको कोई प्यार नहीं करता, जिसका कोई नहीं है, तो वो क्या करते हैं? सेकेंड हैंड इमोशन को फील करते हैं. हाउ दे डू इट? जैसे कि जो नर्ड्स होते हैं, दे डू नॉट गो इन टू सोसाइटी, बट दे फुलफिल देयर इमोशंस बाई रीडिंग बुक्स, टेक्स्ट एंड वॉचिंग मूवीज एंड अदर थिंग्स. तो दे फील कनेक्टेड विद दम. एंड ऐसे फीलिंग्स को क्या कहते हैं? विकैरियस सेकेंड हैंड फीलिंग या विकैरियस फीलिंग्स. दीज आर विकैरियस फीलिंग, सेकेंड हैंड फीलिंग्स. Time is fleeting. During the late winter and early spring of 1948 and 49, great number of people were particularly boosted joining and forming a paramedic club. If you have not heard of this amazing phenomena, I won't attempt to describe it in any of the multifarious ramification, but the main point was that you paid $2, treated some people to coffee and donuts, and shortly thereafter, if you were gullible enough to fall for this get-rich-quick scheme, supposedly received a return of some fantastic amount like $2,064 for your investment. For a short time, Pyramid Club were a rage. Soon they had vanished from American scene. Anything that lasts for a very short time, leaves no trace, is ephemeral.
बेसिकली कह रहा है, देखो एक अमेरिका में ट्रेंड चला 1948 और 49 के टाइम में, जिसमें एक क्लब था जिसका नाम था पिरामिड क्लब। पिरामिड क्लब का क्या मतलब था? पिरामिड क्लब में क्या होता था कि आप $2 इन्वेस्ट करते थे एंड यू गेट अ रिटर्न ऑफ $2064। एंड ये बहुत तेजी से अमेरिका में रैपिडली फैला एंड सून इट डिसअपियर्ड, लिविंग नो ट्रेस बिहाइंड, कि ऐसा कुछ हुआ भी था कभी। तो दिस टाइप ऑफ थिंग्स, these types of things which never leave any evidence and last very of a short time, that is ephemeral. Now, how not to call a spade? Words are only symbol of things, symbols of things, and they are not the things themselves. ठीक है, वो खुद एक वस्तु नहीं है, बट वो किसी चीज़ को सिग्निफाई करते हैं। दिस बाय द वे इज वन ऑफ द बेसिक टेनेट्स ऑफ semantics. But many people identify the word and the thing so closely that they fear to use certain words and symbolize things that are unpleasant to them. डायरेक्ट नहीं बात करेंगे, जैसे हमारे इंडियन सोसाइटी में सेक्स के बारे में बात करना, ऐसा लगता है कि सेक्स के बारे में बात कर लिया मतलब सेक्स हो गया। ठीक है, तो ऐसे चीज़ों से मतलब वो वर्ड को रिलेट करने, उस एक्शन से रिलेट कर देते हैं। तो दे ऑफन ट्राई नॉट टू यूज़ दैट वर्ड एंड क्या करते हैं, उस चीज़ को, उस एक्शन को डिराइव करने के लिए दे यूज़ समथिंग एल्स। लाइक यहाँ पे जो प्रिकॉशंस यूज़ होते हैं, प्रिकॉशंस लाइक condoms in sexual, they try to use some other word instead of using that word because they symbolize that word with the action. क्या कर सकते हैं, चलो आगे। I know that this is confusing, so let me illustrate. Words having to do with death, देखो यहाँ पे कि जैसे मौत है, death, sex, certain portion of the anatomy, excretion, etc. are avoided by certain people. लोग avoid करते हैं सेक्स को, डेथ को, और अगर कोई स्पेसिफिक बॉडी पार्ट है उसको, एक्सक्रीशन को, ठीक है। दीज पीपल प्रिफर सर्कमलोक्यूशन, जैसे कि पॉटी बोलते हो तुम लोग, फीसेस, पॉटी। दिस पीपल सर्कमलोकेशन मतलब उसके आसपास घूम के बताएंगे, मेन सेंटर की बात नहीं बताएंगे। वर्ड्स लाइक टॉक अराउंड एन आइडिया और दैट मीन और इम्प्लाइज समथिंग बट डोंट कम राइट आउट एंड से सो डायरेक्टली। ये बॉलीवुड मूवीज़ में बहुत इस्तेमाल होता है सर्कमलोक्यूशन, उसके चक्कर में, कॉमेडी मूवीज़ में उसके चक्कर में बहुत ढेर सारा रायता फैलता है एंड द मूवी बिकम्स वेरी लाफेबल। मेन आइडिया नहीं बताया जाएगा, बस उसके आसपास घुमा जाएगा। ठीक है, डाई, एक्सपायर, डिपार्ट दिस लाइफ, पास अवे, लीव दिस वेल ऑफ टीयर्स। देखो जो मेन वर्ड है डाई, जो डेथ बोलने से, डाई बोलने से कतराते हैं, वो क्या करते हैं, दे स्टार्ट यूजिंग सर्कमलोक्यूशन। नाउ लेट्स जंप इनटू द नेक्स्ट वर्ड, सेक्सुअल इंटरकोर्स। सेक्सुअल इंटरकोर्स बोलने से जो कतराएगा वो क्या करेगा, intimate relations, playing house, shacking up, prostitute, lady of the evening, filet de joie, painted woman, lady of easy virtue, filet de nude, streetwalker, hooker, house of prostitution, house of ill fame, bawdy house, house of ill repute, Bagnoy, brothel, bordello, house, massage parlor, buttocks behind, derriere, ये देखो ये इस तरह के वर्ड सारे फ्रेंच है। rear end, butt, tail, breast, bosom, bust, curves, toilet, powder room, little girl's room, facilities, washroom, lavatory, head. सिंस देखो लेविट्री आजकल रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, वॉशरूम यूज़ कर रहे हैं इंस्टीड ऑफ यूजिंग द टॉयलेट बिकॉज दे थिंक टॉयलेट इज़ अ वेरी वल्गर वर्ड। फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। द लेफ्ट हैंड कॉलम इज़ डायरेक्ट एंड नॉन pussyfooting word. The right hand column is made up of euphemism. Euphemism, ये सारे euphemism है। Let's move on ahead. Small talk. Whenever I am into dumps, I get a new suit. Oh, that's where you get them. Lend me a dime. I want to phone one of my friends. Here's a quarter. Call them all. The doctor says I have snow in my blood. Snow? What's snow? Not a dawn.
What's new with you? What are twins? Okay, what are twins? Womb mates. I took a tweep yesterday. A tweep? Yes, I took a tweep on a twain. These examples are bandinage. Bandinage are small talks, small concise talks, but complete in meaning. Everything but gives milk. But give milk. Everything you have seen a cow contentedly munching its cud. Nothing seems capable of disturbing this animal. An animal seems to want nothing more out of the life than to lead a simple vegetable existence. Some people are like cow, calm, patient, placid, phlegmatic, vegetable like. They are bovine. Bovine क्या है? Cow like, सीधा साधा व्यक्ति. जैसे नहीं बोलते आजकल शादियों में जब रिश्तेदारी अरेंज मैरिज होने जाती है, अरे लड़की तो हमारी गाय है. तो व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर दे आर ट्राइंग टू डिमोन्स्ट्रेट? द गर्ल इज काम, पेशेंट, प्लेसिड, फ्लैगमेटिक एंड वेरी वेजिटेबल लाइक. बोवाइन आज तो आजकल तो नहीं होता ऐसा. Good old days. Do you sometimes experience a keen, almost physical longing for association or places of the past? जैसे अगर आपका नानी का घर आपको बहुत याद आता है, अगर किसी के नानी के घर गए तो आपको अपने नानी का घर याद आने लगता है, आपको वहाँ प्लेस विजिट करने का मन करने लगे, तो यू गेट इनटू व्हाट? You get into a nostalgic feeling when you pass the neighborhood in which you were born and where you spent your early years. Do you have a sharp, strange reaction, almost akin to mild nausea? ऐसा लगेगा कि मुझे सब याद आ गया. When you are away from home and friends and family, do pleasant remembrance crowd in your mind to the point where your present loneliness becomes almost unbearable and you actually feel a little sick? This common feeling is called nostalgia. घर की यही बहुत कॉमन वर्ड हो चुका है आजकल, इसको तो पढ़ाने की भी ज़रूरत नहीं है. जब आप अपने आप को एक पास्ट फीलिंग से एसोसिएट करने लगते हैं. Nash delightful definition: the cow is of the bovine ilk, one end moo, another end milk. What a poetry. Okay. Sounds that grate. Some sounds are so harsh, grating and discordant that they often offend the ears. जैसे कि किसी इंडस्ट्रियल एरिया में चले जाओ, वहाँ लगातार हैमरिंग हो रही है, देयर इज़ ग्राइंडिंग, तो आपके ईयर्स के लिए वो स्वीट नहीं है. दे आर वेरी हार्श. they lack all the sweetness, harmony, pleasantness. Traffic noises, जैसे traffic noises in big city, electronic rock music, and chalk is squeaking on a blackboard. Such blaring, ear-splitting and spine-tingling sounds are called cacophonous. कैली आया था, कैको मतलब harsh, bad, फोर मतलब sound. Eating habits: lions, tigers, wolves, and some other mammals subsist entirely on flesh. No spinach, salad greens, whole wheat cereals, sugar, or spices, just good red meat. These are carnivores. ऐसे एनिमल्स जो मीट पर डिपेंड करते हैं, दे आर कार्निवरस. प्राइवेट एंड पब्लिक. There are certain things most of us do in private, like taking a bath. Some people like to engage in other activities in complete privacy, like eating, reading, watching TV, sleeping, for example, all alone. Um, the point is that while these activities may be conducted in privacy, there is never any reason for keeping them secret. Basically, ऐसे चीज़ जो हम करते हैं प्राइवेटली, बट उनको सीक्रेट रखने की ज़रूरत है नहीं. हम नहाते हैं रोज़, बट इसको बताने की भी ज़रूरत नहीं है और सीक्रेट रखने की भी ज़रूरत नहीं है. एवरीबडी नोज. मैंने ये मूवी देखी है. ऐसा नहीं है कि इट इज़ मतलब सीक्रेट है, इसको मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट है ये सीक्रेट ना. वी डू दीज थिंग्स इन प्राइवेट, बट दे आर नॉट दैट इम्पॉर्टेंट. वी कैन टेल the point. Okay, but there are other activities that are kept not only private but well shrouded in secrecy and concealed from public knowledge. These activities are unethical, illegal, or unsafe, like having an affair with someone whose spouse is your best friend. That's so bad. Betraying military secrets to the enemy, trading in narcotics,
ब्राइबिंग पब्लिक ऑफिशियल्स एट्सेट्रा। अब जैसे किसी भी कंपनी की एक प्राइवेट कुछ डेटा होता है जो वो लीक नहीं करती है पब्लिक डोमेन में, बिकॉज अगर वो लीक हो जाएगी तो कंपनी जो है प्राइवेसी ब्रीच कर रही है फॉर ऑफ देयर एम्प्लॉयज़ एंड अदर थिंग्स। तो ऐसी चीज़ों को प्राइवेटाइज किया जाता है, ऐसी चीज़ों को सीक्रेट रखा जाता है, इवन बहुत लेयर्स ऑफ सीक्रेट डाले जाते हैं ताकि वो कभी बाहर ना आए। जैसे कि इफ़ यू ज्वाइन अ कंपनी और यू स्टार्ट वर्किंग इन देम, तो दे ऑलवेज टेल यू नॉट टू रिवील कंपनीज सीक्रेट डेटा और कंपनीज डेटा टू अ पब्लिक डोमेन। वाई सो? बिकॉज दीज आर इम्पॉर्टेंट डेटाज। ओके, जैसे आपने किसी ऑफिशियल को ब्राइब किया और आप सबको जाकर तो बताओगे नहीं कि हाँ मैंने ब्राइब किया, तो दीज थिंग्स आर सुपर सीक्रेट। Arrangements, activities or meetings that fall under this category are called clandestine. Clandestine. Okay, खत्म हो गया। Penury, vicarious, ephemeral, euphemism, bandage, bovine, nostalgia, cacophony, carnivorous, clandestine. Now let's work with the words. Now ephemeral, what is ephemeral or what is euphemism? बताओ भाई। Penury, होम कहाँ गया? Poverty. Let's work around. Bovine, cow like. Secret, what is secret? Clandestine. Carnivorous, meat eating. Cacophony, heart sound. Nostalgia, homesickness, पुरानी यादें ताज़ा हो जाए। Euphemism, circumlocution। और क्या बचा? Vicarious, second hand feeling। और क्या बचा? Banter and impermanent। ephemeral इवेंट था ये। impermanent, शॉर्ट टाइम में ख़त्म हो जाएगा। bandage, banter। Do wealthy people normally live in penury? No। अमीर आदमी क्यों रहेगा penury में? Is vicarious thrill one that comes from direct participation? नहीं, वो तो second hand feeling है ना। Do ephemeral things last very short time? Yes। Is euphemism the substitution of an inoffensive term for another of the same meaning that may sound offensive, vulgar and indelicate? Yes, उसका पूरा मतलब ही वही है। Does bandage show light-hearted क्या है? Frivolity? हाँ। Are bovine people high-strung and nervous? High-strung and nervous, bovine people सीधे होते हैं तो नहीं। Does one get a feeling of nostalgia for past occurrences and relationship? Yes. Is cacophony pleasant and musical? No. Do carnivorous animals eat meat? Uh-huh. Is clandestine meeting conducted in secrecy? Yes. Now let's move further. Penury and affluence. Penury, affluence, opposite. Vicarious, actual, opposite. Ephemeral, eternal, opposite. Euphemism, less offensive word, same. Bandage, light, teasing talk, same. Bovine, high strung। हाई स्ट्रंग का क्या मतलब हुआ? यहाँ पे भी आया था ना हाई स्ट्रंग। आर बोवाइन पीपल हाई स्ट्रंग एंड नर्वस? यस। ओके, ऑपोजिट। नॉस्टैल्जिया, लॉन्गिंग फॉर पास्ट, सेम है। कैकोफोनी, यूफोनी, ऑपोजिट होगा ये। कार्निवरस, ऑपोजिट। क्लैंडस्टीन, हिडन, सेम। चलो मिलाएं। पहला सेम है, फोर्थ सेम है, गुड। फिफ्थ सेम है, गुड।
उसके बाद 7th ऑपोजिट है, 7th नॉस्टैल्जिया, लॉन्गिंग फॉर पास्ट। आंसर गलत है यहाँ पे, यहाँ सेम होगा। नॉस्टैल्जिया का मतलब इतना लॉन्गिंग फॉर पास्ट। इसके बाद यूफोमी ऑपोजिट 8th का, कैकोफोनी और यूफोनी ऑपोजिट है। सेम है, गुड। सॉरी, जरा मैं पेन पतला कर लूँ, कलर चेंज कर दूँ। कैकोफोनी, यही था ना, इफीमेरल, सॉरी हम कंफ्यूज हो गए। इफीमेरल, डायर, प्यूनरी, euphemism, experienced as spectator rather than second hand feeling है, vicarious feeling होगी है। actual nostalgia, light half teasing, banter, ये आपका हो जाएगा bandage, solely carnivorous, cow like bovine, clandestine। सेशन 39 ख़त्म। अब हम लोग मिलेंगे सेशन 40 में जल्दी ही, तब तक के लिए बाय बाय।